हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो जो है वो गोदी मीडिया के ऊपर नहीं है। हम ज़्यादातर गोदी मीडिया के ऊपर रिएक्शन देते हैं, बट आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो आयशा रोज़िल है, ये न्यू मुस्लिम है। मतलब न्यू मुस्लिम तो नहीं, 2-3 साल पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये ब्रिटिश एक्ट्रेस थी और कैसे इनकी ज़िंदगी में दीन आया, कैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके ऊपर हम वीडियो पहले बना चुके हैं। इनकी रिएक्शन वीडियो पहले बना चुके हैं। आज इनकी फ्रेंड आई है इनसे मिलने के लिए। उनको ये सूरह रहमान पढ़ के सुना रही है, मतलब वो कुरान शरीफ पहली बार सुन रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली वीडियो। उनका रिएक्शन देखेंगे, मुझे कैसे लगी सूरह रहमान। नॉन मुस्लिम जब पहली बार कुरान शरीफ सुनता है तो उन्हीं का रिएक्शन हम आज नोट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। वीडियो को इसकी मत करना, पूरा देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करते हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aisha Rosie. I'm with Olga. Hi guys. So Olga. इधर वाली लेफ्ट वाली हैं आयशा रोज़िल। So beautiful. And we also shot a video where you asked me questions. ओल्गा को पढ़ के सुनाएंगी, वो कुरान शरीफ पढ़ के नहीं सुनाएंगी, मतलब रिएक्शन देंगे उस पर। Because I wanted you to get like a kind of feel. And I know you've been reading the Quran. Yes. Which is amazing. And you've been asking me questions, and I've been trying my best to answer, which I'm not always the best, but No, you're incredible. Don't do it like that. And I know you've listened to the Quran before. Yes. Yes. इधर वाली है ना जो वो है आयशा रोज़िल, और उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस थी वो, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो उनकी फ्रेंड आई उनसे मिलने के लिए, तो उनको सुनाएंगे वो कुरान शरीफ। दोनों रिएक्शन देंगे उस पर। I was living in Cambridge at the time, and I was alone, and I was in an apartment. And I've never really had like supernatural experiences, like but in the kind of maybe like way that made me very scared. But for some reason, I'm just absolutely convinced I saw a ghost, like in slow motion, walking behind me in a mirror. And I wrote to my boyfriend, who at the time who was Muslim, and he's still in my life, just no longer a boyfriend, now a fiance. And I was like, listen, this has happened. Like, what do I do? Please help me, because I'm terrified and I can't sleep. And he sent me the Quran to listen to, and I put it on, and I swear it was the only thing that helped me go to sleep. And I felt very, very safe and just very at peace. I did not know what was being said, but it was so beautiful and so melodic. And anyway, that was the reason for my interesting response to this question. This is the second time after this that I'd be listening to it. Okay, cool. So let's give it a go. Let's do it. So before we start the video, I'm raising money for Syria. So guys, please donate. Links in the comments and the description. Okay. Yeah, it's really important. Okay. Because, I mean, these people were in situations that I can't even imagine, living in tents. Their families have been lost their families to the earthquake. सीरिया के लिए फंड रेज कर रहे हैं। सीरिया में तो like no food, अर्थक्वेक आया था ना शायद, उसके लिए वहाँ पे शायद उसके लिए and we're raising money to help फंड रेज कर रहे हैं। Please donate. Absolutely, and I've already donated, but I'm going to go and donate using your link as well, because yeah, so important and such a powerful cause. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. वाओ, सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. भाई अभी से गूज़बम्प आ गए। कितनी अच्छी वीडियो है यार, कितनी अच्छी आवाज़ उनकी। علم القرآن خلق الإنسان. सुभान अल्लाह। علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها. ब्यूटीफुल आवाज़ है माशाल्लाह। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان क्या बात है। من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما क्या बात है, क्या बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Wow, you know that was Wow, beautiful, really, really interesting. amazing. Listening to that, I felt like at first, at first it was just really calming, and it was just like I was listening to something that was on a device. And then, as a little bit of time went on, like I really started to feel it. First, I really felt it in my heart, very deeply in my heart. And then it's somehow the experience of that sound like spread across my chest, and I felt it. It was like I was hearing it externally but also internally at the same time. I don't know if it has to do with the frequency or the words or what exactly, but that was really, really powerful in a way that I actually didn't expect it to be. It was quite arresting in a way. Again, like, it just kind of everything stopped, everything paused. I wasn't really thinking or hearing or looking at anything in particular. It was just very, very grounding and very, very powerful. As somebody who is reading the Quran, Yes. is there anything about the Quran in general that makes you like really drawn towards it or interested in it? Absolutely. So I would say this started with actually just having come across like the Muslims in my life in general. That kind of interest started there. I saw that there was a particular peacefulness and humbleness to the Muslims that I've come across pretty universally, across all walks of life, across all nationalities. It was not like rooted towards a specific kind of type of person, but that was what kind of started. That's where that interest started. And then I met my fiance, and I would ask him all sorts of questions, most of them just so silly, just like the questions I ask you. Oh my God, lots of silly questions there.
and then I was drawn to the Quran, and I think something that I see echoed obviously in both the Muslims I've seen and in the Quran. It's a few patterns that have really drawn me. I think one of them is this self-discipline that is born out through actions like Ramadan, like fasting, like prayer, right? Prayer 5 times a day. That lasts all throughout the day, like starting really, really early in the morning, finishing quite late. So that's the one aspect, self-discipline. I'd say the second aspect is this, it's both this idea of kind of humbleness, but equally the sense of empowerment, and they're kind of twin. So humbleness in the sense of there is something much greater than you, but empowerment in the sense that you have this direct link to this being that is greater than you. You don't need a mediator, an interpreter, anything. You have that direct connection, which I find really, that kind of combination I find very, very cool. And I would say the last point is generosity. And in the other video we spoke a lot about, for example, interest, how interest is a big no-no within Islam, and giving to people that are, that are not as perhaps like financially fortunate, and during Ramadan that experience actually being heavily rooted in the sense of this is how, going without food and water, this is how people live actively, and creating that radical empathy for people that perhaps live like that. So I'd say it's those 3 things that I've seen both borne out in the people that I've met and in the Quran. I'd say also there's a lot of misconceptions that I have heard and just kind of spoken about. And as I said, I'm very skeptical and very analytical as a person, so I want to go to the source. When I hear people say things, I'm like, okay, I'm going to form my own opinion, I'm going to go to the source, and I want to understand. Like, a lot of people, for example, cite the Quran or Islam as being an oppressor of women, of forcing the hijab onto women, of forcing a particular way of being onto women. And so I have to go to the source and see what's really happening there. And I think on those sorts of issues I've just come to see how fundamentally misunderstood they are, and how people falsely attribute these sorts of things to a text that I think to its core is very, very beautiful, and that I really, really enjoy. SubhanAllah, that was amazing insight. Thank you so much for sharing your insight. And make sure you guys watch the next video, inshallah, about asking questions. Thank you guys for watching. Assalamu alaikum. फ्रेंड्स, ये थी आयशा रोजिल, और ये उनकी फ्रेंड थी ओल्गा। तो ओल्गा का फैंस है, वो मुस्लिम है, तो उन्होंने उनको कुरान शरीफ की सूरह रहमान पढ़ के सुनाई। सूरह रहमान इतनी प्यारी आयत है कुरान शरीफ की कि जब हमारे हाफिज़ साहब पढ़ते हैं ना, मस्जिद में जब पढ़ते हैं तो गूज़बम्स आ जाते हैं पूरे। मतलब इतनी प्यारी है सूरह रहमान, और किसको नहीं अच्छी लगती सूरह रहमान। मतलब पूरा कलाम पाक ही अच्छा है, और हमारे मन करता है हमारी आवाज़ भी अच्छी होती तो हम भी सूरह रहमान पढ़ते, बट हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है तो हम भी तब भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह को ये चीज़ पसंद आती है कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अटक अटक के कुरान शरीफ पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता तब भी तुम पढ़ रहे हो, तो अल्लाह को ये चीज़ और प्यारी लगती है। तो ऐसा नहीं कि जिसकी आवाज़ अच्छी होगी वही सूरह रहमान पढ़ेगा, कोई जिसको कुरान शरीफ नहीं आता, अटक अटक के पढ़ता, वो भी पढ़ेगा, तो उसको भी अल्लाह को वो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी। तो ये रोजिल थी, आयशा रोजिल, तो इनकी मैंने एक वीडियो पहले बना चुका है, इनकी कारगुजारी कैसे ये मुस्लिम हुई थी, ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, और जब 8 साल की थी, इनका भाई था वो उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी, और ये भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी। तो उन्होंने बताया कैसे उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जब 20 साल की हुई, फिर वो क्लब जाने लगी, वहाँ जाके फिर उन्होंने शराब पीने शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कैसे उनकी ज़िंदगी में दीन आया था, कैसे उन्होंने फिर इस्लाम को कबूल किया, और अब वो ब्रिटिश एक्ट्रेस से छोड़ के उन्होंने एक्ट्रेस छोड़ दी, अब वो पूरी प्रॉपर ईमान में दाखिल हो चुकी है। तो उनकी कारगुजारी की एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे है, तो उसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा आपको ना, आयशा रोजिल का। तो 5 लाख से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो उन्होंने बना रखी है। उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनकी वीडियो देखने डालना सारी। उन्होंने अपनी लाइफ जो एक्सपीरियंस शेयर की है, किस तरह से वो मुसलमान हुई और क्या क्या उनको लाइफ में चैलेंजेस आए मुस्लिम होने के बाद, तो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हुई है हमारे साथ, तो जाके देख लेना। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो हट के वीडियो बनाई थी हमने, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और लाऊं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।